All right. Good evening, everybody. I am Mokshit Kothari. I think this is your first class with me. I have completed 6 papers out of 13. I'm also doing CA. So I've completed my CA intermediate. I've been the All India rank 1 in CM1 and CS1. And I was the Nagpur topper in CA intermediate. So I'll be taking some parts of your CM1A paper. All right. Is that fine? I'll explain to you some of the ground rules of the class that I expect. Since generally the batch sizes are smaller, I can actually call each one of you out. So whenever I ask a question which is a yes or no question, I expect a yes, a no, or a thumbs up. It is not a rhetorical question. And I will keep asking until you give me a yes or no or something like that. Is that fine? So I'll call you out and I'll ask for it. Khushi, Rashi, Aditi, is that fine? ठीक है? So this is the only primary rule of the class. I need to know that you are in the class. Is that fine? Other than that, there are no big rules. All right. Okay. So you are supposed to be watching the theory videos that Praveen sir and Shivangi ma'am have posted, right? Have you begun the theory videos? Shashank, Khushi, have you started the theory videos of time value of money? Yes. Start. Others? How come only the sums one? You would first have to do the theory videos, right? Oh, you just joined. Okay. Rashi, Khushi. Because today's class depends on how much you already know about time value of money. Because my plan was to do sums from the study material. Okay. So, everybody familiar with the concept of simple interest? Simple interest is amount is equal to 1 plus I into n times p. Fine. Everybody familiar with compound interest? Shashank, Rashi. All right. Amount is equal to 1 plus I whole power n times p. All right. This will become, in our terminology, this will become the accumulated value and this will become the present value. All right. Everybody familiar with what the accumulating factor is? So if I say A 0 to T, you understand what that means? Shashank, Khushi. Listen, I won't move forward until you tell me. ठीक है? So, itna you're familiar with. So, we can do the first couple of sums. So, how this will go is I have sums with me here. I'll tell you the sums. You will try to solve them by yourself. And then we will move on to me solving them for you. Is that fine? Is that all right? Okay. Please move to solving this question. There is a sum of 1,000 rupees which becomes 2,500 in the first 5 years. What is the accumulation factor from time 0 to time 5? Once you are done with that, what will be the equivalent simple annual interest rate and what will be the equivalent compound annual interest rate, which will lead to the same accumulation. All right. So, okay, for the first couple of sums, maybe I'll solve.
Or do you want to solve this by yourself? Depends on you. I can solve this or you can solve this by yourself. What do you want me to do? Are you solving it? All right. Sure. So the accumulation factor from 0 to 5 is calculated by taking in the fund value at time 5 upon fund value at time 0. All right. This can be written in multiple variables, but I'll write it as fund value at time 5 and fund value at time 0. So what is the fund value of time at time 5? It is 2500. What is the fund value at time 0? It is 1000. So the accumulating factor A0, 5 becomes 2.5. Is this fine? ठीक है? If you want to note it down, I'll give you a couple of minutes. I mean, it's 3 lines, so it shouldn't take a lot of time. But I'll give you a minute if to copy because I'll erase it. Do you want time? Okay. Moving on. Now, our A0, 5 is equal to 2.5. What is the formula for simple interest? My 1 plus I into N should be equal to 2.5. N is equal to 5. 1 plus I into 5 should be equal to 2.5, which means 5I is equal to 1.5, which implies I is equal to 1.5 divided by 5, which is equal to 0.3, 30%. Is this fine? This is the basic things that we have done till 8th grade or something. Like जब 8वीं 7वीं 8वीं में आता था compound interest, simple interest, तब ये करते थे. Not really the things that make actuarial science like what it is. So this is the first answer. This is equal to 2.5. This is equal to 30%. And the third answer is, so 1 plus I whole power n is equal to 2.5. So 1 plus I whole power 5 is equal to 2.5. Now, is everybody familiar with log? Khushi and Rashi, is everybody familiar with log? All right. So there are two ways to do this. These type of questions will come. Either you take the fifth root on both sides, which is 1 plus I is equal to 2.5 whole power 1 by 5, and then you do minus 1 here. So I is equal to this. Can somebody, all of you have this calci?
So you will do 2.5, you will do this whole power x के पास जब ऊपर डब्बा बना हुआ है whole power 1/5 minus 1. The screen should look something like this. अब blur ही नहीं है. Just give me. It should look like this. All right. ठीक है. I will do this hand holding with the calculator for the first couple of lectures only. After that, we'll move on because it is very intuitive using this calculator. All right. तो ये सबको समझा. This is equal to I is equal to 20.11%. Is this fine? Yeah. Very good, Shashank. ठीक है. This is 20.11%. Okay. So now, yes, Kushi. सर इसमें लॉग लेके कैसे करेंगे एक बार हाँ, मैं लॉग लेके बता देता हूँ. ओके, तो सवाल ऐसा है कि 1 + I होल पावर 5 इज इक्वल टू 2.5. ये अपना सवाल है ना. तो अपन लॉग दोनों साइड पे लेंगे तो ये बन जाएगा 5 log ln, नॉट log. log इज टू एनी बेस, ln इज टू बेस e. ठीक है. ln 1 + I इज इक्वल टू ln 2.5. ln इससे ये सम डिफिकल्ट हो जाएगा. मतलब तो ln 2.5 अपॉन नहीं ln से ये वाला सम नहीं होगा. मतलब इट विल हैपन बट इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो जैसे फिर अपन वापस वील हैव टू कीप द ln आउट. ln 2.5 अपॉन 5 is equal to 1 + I. मतलब we raise this to the power e and then we ln 2.5 by 5 minus 1 is equal to I. इससे भी आप करके देखोगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा. बट ये सम में उतनी जरूरत है नहीं. See, using this as well, I am getting the same answer. ठीक है. Yes. But this is more complicated. Like this is the only way to do the sum in some cases. In this case, it is the complicated method. ठीक है. कभी कभी log ही यूज करना पड़ता है पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है. Okay, you have been given that a sum of 4600 becomes 8200 in 10 years. Okay. और उसके बीच बीच के अक्यूमुलेशन फैक्टर्स दिए. तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 8 9. तो दिया हुआ है कि 0 to 9 होता है 1.8. ठीक है. 2 to 4 होता है 1.1. 2 to 7 होता है 1.32 और 4 to 9 होता है 1.45. अब आपको ये सब में से कैलकुलेट करना है अक्यूमुलेशन फैक्टर 7 to 10. अपने को ये निकालना है. ठीक है. So now how will we go about doing this? Do you want to try this on your own? This is an interesting problem. This is like a puzzle rather than an actual problem. और ऐसा problem exam में भी कम ही आने को दिखेगा. पर do you want to solve this? I can give you a couple of minutes to solve this. If you don't want to solve this, I can help you with it. If you don't want to solve. And again, even this option is given to you for the first couple of classes only. After that, I will expect you to solve it. Is that fine?
तो बताओ मेरे को फिर टू सॉल्व इट. You do realize you can switch on the mic and speak, right? नहीं तो बताओगे तो करना, नहीं करना है. Okay, I'll give you till. Okay, 1.19. That is correct. बाकियों का आया. मतलब आर यू सॉल्विंग और नहीं आ रहा है कि आर यू नॉट सॉल्विंग ऑल टुगेदर. Okay, let's see. First of all, we have A010 as well, which is equal to 8200 upon 4600. पहले ये निकाल लिया, ये कितना हुआ. This is equal to 1.78. ठीक है. 26. ये एक हो गया. अब we have okay, A010 is equal to A02, A27 and A710. We know this, we know this. This is what we have to find out, and we don't know this as of now. Okay. So अब A02 कितना होता है. A02, sorry, A09 can be written as A02, A A02, A2, 4 and A4, 9. So we know this, we know this, we know this. So A02 is equal to A09 upon A24 into A49, which becomes equal to 1.1285. So now A010 is equal to A02 into A27 into A710, which means A710 is equal to A010 upon A02 into A27, which becomes equal to 1.1967. ठीक है. खुशी ने तो शायद आंसर दे दिया था क्या. नहीं, राशि ने आंसर दिया था. खुशी, शशांक, इज दिस फाइन. Okay. Again, this is an unlikely question to come in the exam. ठीक है. Okay. So you have to make a
payment of 5,000 5 years from now. A saving account pays 10% interest compounded annually. How much should you deposit at time zero, which is right now, to have 5,000 5 years from now? This is a fairly easy question, so I want you to solve this. Okay. शशांक, you're incorrect. अगर मेरे को आज से 1 साल बाद किसी को पैसा देना है और मेरे को बैंक अकाउंट में आज डाल रहा हूं मैं, तो इंटरेस्ट जुड़ के ज्यादा हो जाएगा ना मेरा पैसा. इफ आई पुट इन 8,000 टुडे in a interest deposit account, I will have more 5 years from now. So I cannot put 8,000. 8,000 डालूंगा तो मेरे पास ज्यादा पैसा होगा. Khushi is probably correct. Yes, Khushi is correct. So x into 1.1 whole power 5 is equal to 5,000. So what is my x? X is equal to 5,000 upon 1.1 whole power 5, which is equal to 3104.6. ठीक है. X is called the present value of that stream of cash flow. ठीक है. So now, is everybody familiar with the definition of V? V is very important. इससे ज्यादा आपको पूरे कोर्स में कुछ देखने नहीं मिलेगा. Yes. If I have X today and Y 1 year from now, and the interest rate is I, my X is equal to X is equal to Y upon 1 plus I, or X is equal to YV. So essentially V is equal to 1 upon 1 plus I. This will be seen in certain cash flow part of the paper. In the contingent cash flow part of the paper, this will be everywhere. So if it is more than 1 year, if it is n years, this becomes 1 plus I whole power n. So this becomes V power n. So Vn is equal to 1 upon 1 plus I whole power n. ठीक है. Everybody fine till here? Okay. Is everybody have all of you studied the D notation in the theory chapter, like the theory videos? ये D का notation पढ़े हो सब? Guys, Khushi, Shashank, Rashi.
थ्योरी वीडियोस में डी का नोटेशन पढ़ा है? Okay. Yes, yes. It is easier to like either unmute yourself or do a thumbs up. So what is D? X is equal to 0, 1. X is equal to 1 minus dy. ठीक है? X into 1 plus I is equal to y, which means 1 plus I is equal to 1 upon 1 minus d. ये इक्विवेलेंसी मालूम है? ठीक है. Okay. So let's do a question. This is a simple, straightforward question. Calculate the PV of 10,000 3 years due 3 years from now. Compound discount rate of 5% per annum. Please go ahead and do this. I am just trying to gauge how well you have studied the basics, because वैसे D का notation कम use होता है, but कभी कभार it becomes very important. $85? हाँ. Okay. Shashank, can you tell me the formula that you would use to calculate this? Can you unmute yourself? Yes. Can you tell me the formula? 1 plus I की पावर 3 D है. माइनस 1 प्लस D प्लस नहीं होता, D माइनस होता है. 1 माइनस D फ्यूचर पावर वैल्यू पावर -3. नहीं, पावर प्लस होता है. The concept is very similar. You discount a future value and you accumulate a present value. So present value is equal to 1 minus D whole power 3 times future value. ठीक है? With rate of interest, it is present value into 1 plus I whole power 3 is equal to future value. Do you understand? जैसे मेरे को where does this formula come from is very intuitive. 1 2 3 यहाँ पे 10,000 मिलने वाला है. D is equal to 5%. What does that mean? मतलब अगर मेरे को आज के दिन के मतलब आज मैं खड़ा हूँ 0 पे, 1 साल बाद मेरे को अगर 100 रुपए मिल रहा है तो आज मैं उसके लिए 95 रुपीज दूंगा. ठीक है शशांक? और आय का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आज अगर मेरे पास 100 रुपए है, अगर आय मेरा 5% होता तो 1 साल बाद मेरे को 105 रुपए मिलता. ठीक है? तो क्लियरली D इक्वल 5%,
and I equals 5% are two different things. ठीक है, they are not the same thing at all. तो अब 0 1 2 3, ठीक है, यहां पे 10,000 मिल रहा है, तो मैं एक बार 1 माइनस डी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक बार 0.95 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं यहां हूं. व्हाट इज दैट? दैट इज 9500. ठीक है, मैं एक और बार 0.95 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं यहां आऊंगा, विच इज 9025. और मैं तीसरी बार 0.95 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं आऊंगा मेरे आंसर पे, विच इज 8573.75. Okay, now if I have to take this from zero, and if my question was कि आज के दिन पे मेरा डिस्काउंट रेट 5% है और मेरी प्रेजेंट वैल्यू 8573.75 है, ये मेरे को बताओ कि 3 साल बाद फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, अक्यूमुलेट कितना होगा. तो देन आई वुड हैव डन 8573.75 अपॉन 1 माइनस डी होल पावर 3. ठीक है, so generally when there is a positive interest rate or when there is a positive discount rate, then my present value is always less than my future value. तो एक आपका चेक वही हो जाता है, बेसिक चेक, कि अगर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं और प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आ रही है फ्यूचर वैल्यू से, तो आई एम मोस्ट डेफिनेटली डूइंग समथिंग रॉन्ग. व्हेन द व्हेन इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट इज पॉजिटिव. ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, मूविंग फॉरवर्ड. ओके, क्वेश्चन 5. Investment of 1,000. Calculate accumulated value 5 years. A. Simple discount 8%. Compound ठीक है. Now, I want each one of you to answer one question. I want Shashank to answer part B. I want Khushi to answer part A, and I want Rashi to answer part C. Khushi, can you switch on your mic? Yes, sir. You can. If you can't, just tell me the formula in the chat box. There is some background noise in your chat, so you can write the answer in the text box. ठीक है? शशांक, खुशी, राशि. ठीक है? ओके, आंसर क्या आ रहा है फिर इसका? Rashi is giving me yes. Rashi, your answer is correct. खुशी, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? कैलकुलेट करके बता दो ना. खुशी करेक्ट.
शशांक क्या फॉर्मूला यूज होगा? शशांक, अपने पास प्रेजेंट वैल्यू है और अपने को फ्यूचर वैल्यू निकालना है। तो अगर अपनी इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट रेट पॉजिटिव है तो मैंने क्या चेक बताया अभी, इफ पीवी इज ग्रेटर देन फ्यूचर वैल्यू देन कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगा है शशांक? 1 minus d power 5. 1 - d⁻5 होगा। देखो, जब डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाते हो तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 - d⁻5 इंटू फ्यूचर वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू दी है 1000, तो फाइनल क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाय 1 - d⁻5। ठीक है, Yes. और ये चेक वापस, योर पीवी वाज 1000, योर फ्यूचर वैल्यू वाज कमिंग टू बी 680.59। ठीक है, वो एक Yes. चेक है। Be very careful. When we are doing interest, we are doing PV 1 plus I whole power n is equal to FV. When we are doing discount, we are doing PV is equal to 1 minus D whole power n FV. ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 0.92 होल पावर 5, 0.92 होल पावर 5। तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाता है 1517.26। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड अगेन, a payment of 2000 a payment of 2000 is due in 4 years। आज अपन जीरो पे खड़े हैं, ये फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, कैलकुलेट पीवी। ए, सिंपल इंटरेस्ट एट 3% per annum। बी, सिंपल डिस्काउंट at 3% per annum। C, compound interest at 3% per annum। तो अभी सिंपल इंटरेस्ट राशि, कंपाउंड इंटरेस्ट खुशी एंड सिंपल डिस्काउंट शशांक। फ्यूचर वैल्यू को खींच के प्रेजेंट तक लाना है। ठीक है, हाँ मतलब एफ वी ए वी सेम थिंग। खुशी सेज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 3% में 17 कितना रहे? राशि, आई डोंट अंडरस्टैंड योर डाउट। ओ वैल्यू ऑफ ये 2000, सॉरी, 2000। ओके,
Khushi, your answer is correct. Wait, just give me a moment. Your answer is fine. Or Rashi, your answer is also fine. Shashank, you have used. Okay, simple discount. Just give me one moment. Simple discount. Yes, you are also correct. Great. Okay. मतलब अब डिस्काउंट इंटरेस्ट समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो रहे हैं अपन इट इज कंफ्यूजिंग इन द बिगिनिंग वो ऐसा लगता है कि सब सेम ही तो है पर यू गेट यूज टू इट डोंट वरी ठीक है अच्छा टेल मी हैव यू डन द आई पी बाय पी का कॉन्सेप्ट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स इफेक्टिव डिस्काउंट रेट्स इक्विवेलेंट रेट्स हैव यू कवर्ड दैट इन थ्योरी शशांक ओके तो I can take I can take some questions on that as well, right? ठीक है एक तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन ही लेते हैं दिस इज क्वेश्चन 6 right I have 3000 on 1st Jan I have 3100 on 1st July and again on the next 1st Jan I have 3300 calculate the effective sorry the effective 6-month rates and the effective annual rate. Now effective rates are always compound, never simple. ठीक है तो आपको कभी सिंपल इफेक्टिव रेट नहीं पूछेगा ऑलराइट तो बताइए annual yes you're right now the first half year effective and the second half year effective guys बाकी के if half year effective कहाँ गए
1.653 क्या है? फर्स्ट 6 मंथ्स की सेकेंड 6 मंथ्स? फर्स्ट 6 मंथ्स का इफेक्टिव होगा 3100 अपॉन 3100 अपॉन 3000 -1. As simple as that. 1.653%? Are you saying 1.653% खुशी? नहीं. How did you come at that conclusion? This is 3.33%. ठीक है. I think Rashi you multiplied it by 2 क्या? And the second is 3300 upon 3100 -1. So this is about 6.45%. Not exactly, but 3.45%. ठीक है, ये समझा? मतलब it is nothing but the compound interest of that smaller period. और कुछ भी दिमाग लगाने वाली बात नहीं है. ठीक है. जब अपन इसको आई पी लिखते हैं, आई पी बाय पी इज इक्वल टू 3.33%, तो आई पी बिकम्स equal to 3.33 into 2%. Sorry, not into 2%, into 2. ठीक है. Got this? Okay, मैं एक छोटा सा रिव्यू ले रहा हूँ. फॉर द फर्स्ट क्लास, आर वी मूविंग फाइन? आर वी अ लिटिल फास्ट? आर वी स्लो? How do you like the pace of the class? Please type in how do you find the pace of the class? गाइस, रिव्यू तो दे दो यार, मैं नहीं गुस्सा हूँगा. शशांक, राशि, शशांक. ओके. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन टुडे एंड देन वील एंड द क्लास. अभी 1 घंटे की ले रहा हूँ. एज वी मूव ऑन टू हायर टॉपिक्स, वी माइट एक्सटेंड द क्लास टू 1.5 hour क्लासेस. ओके. अभी क्योंकि अभी अभी बैच चालू ही है, इसीलिए थोड़ा छोटी क्लासेस है. ठीक है. क्वेश्चन 7 आई थिंक. यस. कैलकुलेट द effective annual interest rate that is equivalent to a simple interest of 3% per annum over 4 years.
2.87%. Okay. How do you do this? First of all, the accumulation will be equal to 0 to 4 will be equal to 1.12. How 1 plus 0.03 into 4. Okay. Now, to get the same accumulation from compound interest, it will be 1 plus I whole power 4 is equal to 1.12, which is 1 plus I equal to 1.12 the fourth root or का 1/4 power. So I is equal to 1.12 fourth root minus 1. ठीक है? You plug this into your calculator. Sorry, 1.12 whole power 1 upon 4 minus 1 is equal to 0.0287, which is equal to 2.87%. ठीक है? यहाँ तक आ गए? ओके, अभी टाइम है, एक और क्वेश्चन कर सकते. Let me find you a छोटू सा question. I think okay, ठीक है. There is an option of getting 1 lakh rupees as prize for a person, or she will get 55,000 at time 0, or she will get 55,000 at time 1 and 55,000 at time 2. ठीक है? Now 7% per annum compound interest. ठीक है? Which should she opt? If she intends to withdraw in 2 years, 4 years. करो calculate. So you will have to calculate AV after 2 years for both options. 1 lakh at time 0 or 55,000 at time 1 and 55,000 at time 2. ठीक है? पहले दो का करो. तो 1 lakh का accumulated value क्या आया? 1 lakh into 1.07 whole power 2. Yes, 114490. 55,000 at time 1 का क्या आएगा? This will be accumulated for 1 year, ना?
58,850 और सेकंड विल नॉट बी अक्यूमुलेटेड एट ऑल, तो इसका क्या आ जाएगा 55,000, तो दिस बिकम्स 113850। तो अब ये ज्यादा है इससे, मीनिंग फॉर 2 years you should choose 1 lakh. नाउ सिंस 2 years में 1 lakh चूज करना है, तो अब 4 साल में भी 1 लाख ही चूज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कंपाउंडिंग, इसको और 2 साल आगे बढ़ाओगे तो क्या आएगा 1.07 स्क्वायर्ड, और इसको 2 साल आगे बढ़ाओगे तो 1.07 स्क्वायर्ड. द accumulating factor is the same ना. Similarly, you could have used another method to solve this question. You could have said कि the present value of my 55,000 is 1 plus I plus 55,000 1 plus I squared. This is equal to 55,000 upon 1.07 plus 55,000 upon 1.07 squared. This is equal to 99,441. अब since this is less than 1 lakh and मैं दोनों को अब कंपाउंड सेम रेट से ही कर रहा हूं, तो इफ दिस इज लेस देन 1 lakh देन आई शुड चूज 1 lakh इन एनी केस, 2 साल के लिए भी 4 साल के लिए भी. ठीक है, समझा ये पॉइंट? ये पॉइंट समझा क्या? सर सेकंड वाला वापस देखा होता है. ओके. एट पॉइंट 2 इसकी 1 लाख की अक्यूमुलेटेड वैल्यू ज्यादा थी 55,000 प्लस 55,000 से. ठीक है, Yes. तो अगर मैं 55, so I can, are you familiar with this point that you can only compare two cash flows which are at the same time? Yes. So I brought 1 lakh to time 2 and 55,000 to time 2, और एक 55,000 मेरा time 2 पे ही था. ठीक है, अब what happens if I bring both the 55,000 at time 0? अगर मैं दोनों 55,000 को टाइम 0 पे ले आता हूं तो मेरे को मिलता है बी कैश फ्लो से 99,441 और ए कैश फ्लो से 1 लाख. अब मैं इसको अक्यूमुलेट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 1.07 स्क्वायर्ड और 1.07 होल पावर 4 फॉर टाइम 2 एंड टाइम 4. सिमिलरली इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.07 स्क्वायर्ड और 1.07 होल पावर 4. ठीक है, खुशी इतना समझा? अक्यूमुलेट तो ऐसे ही होंगे. Yes. और इसका आंसर भी सेम आएगा, मतलब जैसे 99,441 इंटू 1.07 स्क्वायर्ड इज द सेम एज दिस 113,850. मीटिंग ही छोड़ दो. ओके, राशि, शशांक, अगर ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है तो यू ऑल कैन लीव द मीटिंग, दैट इज फाइन. आई विल वेट फॉर खुशी टू कम बैक. इफ शी डजंट देन आई विल आल्सो स्टॉप. So I'll formally end the class here. If Khushi joins back, I'll solve her doubt. Sir, which class should we watch for tomorrow? Tomorrow, which? I don't think I have class tomorrow. Tomorrow you have, just give me a moment. I generally will have classes on Tuesday because this time I wasn't able to take on Tuesday. I am taking on Friday. Just let me see who has classes with you. Khushi will have class with you. Paper A. So solve more theory classes from here. मतलब after this. ठीक है? Okay. मतलब we are almost done with time value of money. Khushi will probably take the MAT back questions of time value of money, and then we'll move to interest rates. ठीक है? Okay. Khushi, सर where were एक we? बार रिपीट कर सकते हो नेटवर्क? हाँ हाँ ठीक है, दैट इज फाइन. तो इतना समझ गया ना कि मतलब
ये दोनों छोटे हैं, तो इसको accumulate करोगी तो B will always be lesser than A if the accumulation is at the same rate, right? तो आप इसका प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई भी उसमें फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकते हो. मतलब मैं इन दोनों कैश फ्लोज का 10 साल बाद फ्यूचर वैल्यू निकालूं और उसमें फिर भी डिफरेंस रहा, तो इवन देन माय कंक्लूजन इज द सेम कि आई शुड चूज 1 लाख ओवर द 255,000. ठीक है, इट डजंट मैटर मैं पीवी और एवी कब निकाल रहा हूं. ठीक है, इफ द इंटरेस्ट रेट वॉज डिफरेंट, अगर ये बोला रहता कि बी में इंटरेस्ट रेट 8% है, ए में इंटरेस्ट रेट 7% है, देन इट वुड मैटर, देन माई टाइम विल ऑल्सो मैटर. बट सिंस द इंटरेस्ट रेट इज द सेम, इट डजेंट मैटर. ठीक है.